नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट का केरलम का स्टेट कोऑर्डिनेटर भी है। तो केरला से आज प्लाचमड़ा स्ट्रगल से शांति दीदी जोड़ रहे हैं, तो वो बात करेंगे। वो अभी मेरे ख्याल से वो अभी ज्वाइन करेंगे, वो अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन करेंगे। तो दैट्स इट। All right. Yeah, thank you for joining, Sharad. We'll also come to you when we begin our conversation. This is just to like break the ice a little, like so that everyone. I don't think we've met. I haven't met any of you before, so it's also good to see all of you over here. Anyone else? If okay. Yeah. Noihrit, do you have something to say? Yeah. Am I audible? Yeah. Hello. Yeah. So a little louder, maybe. Yeah. All right. So, hi, I'm Noihrit. I'm currently pursuing masters in TISS Guwahati. Although I'm not from Guwahati, I'm from Tinsukia, which is one of the easternmost area of Assam. And Baghjan is actually situated in Tinsukia, of which I will be talking about. I'm involved in People Ecology Network, which is a collective of people from diverse fields working in things related to ecology, environment, and development. Moreover, I'm also involved in ISA, which is of CPML, and yeah, that's it. Thank you, Noihrit, for sharing. We'll ask you to talk more about yourself later on as well. Okay. Yeah, let's wait for a few more, 2-3 minutes. All of our speakers are here. Caxton, I think he got disconnected for Kebiston. Just a second. लश्के कुछ कहना चाहेंगे शुरू करने से पहले? एक बार आपसे भी, आपका भी। तो मोरना कृष्ण सिकोका मुनियमगिरी मोरना लस्के सिकोका मुनियमगिरी रु कहूची स्टेट ओडिशा आ डिस्ट्रिक्ट रायगड़ा ब्लॉक कल्याण सिंहपुर जीपी पारसाली पटांगपदर गाँव नियमगिरी अंचल रे मोर जन्मग्रहण आ डोंगरिया आदिवासी रे मोर जन्मग्रहण आ मु 2017 29 तारीख 4 मास 2017 रु मु आंदोलन रे जड़ित अछि आ मु काम करछि आज पर्यंत आंदोलन रे जड़ित होई रहिछि आ रहिबी आ काम करिकि एई आंदोलन रे मु रहिबी। So this is Raja translating on behalf of Laskey. Yeah. So Laskey said his name is Laskey Sikoka. He's from Patangpadar village in Niyamgiri, and he's born into a Dongriya Adivasi community, and he has a family, a big family of people who live in Patangpadar village, and the entire he hails from Raigada district, from Odisha, and he has been involved with the movement since 2014, and he will be involved in the movement in the future as well. बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के लश्के। Kebiston, if you'd like to say a few words before we begin. Caxton, if you could sort of, yeah. வணக்கம். தூத்துக்குடியில தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் சேர்ந்த தூத்துக்குடி. நான் வந்து கடற்கரையோரம் இளைஞர்கள் அந்த கூட்டமைப்புல இருந்து வந்திருக்கேன். நேதல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தையும் சார்ந்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற கூடங்குளம் அணு உலை புரோட்டஸ்டா இருக்கட்டும், இங்க இருக்கிற இயற்கை வள சுரண்டலா இருக்கட்டும், கடற்கரையோரம் நடக்கும் பிரச்சனைகளா இருக்கட்டும்,
இது குறித்து முழுமையான ஒரு போராட்ட களத்திலையும் இங்க அரசு இயந்திரங்களுக்கு இன்னைக்கு மக்கள் மீது தொடுக்கப்படும் போருக்கு எதிராகவும் முழுமையா களத்துல நின்று வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். நாங்க ஒரு மீனவ சமூகத்தை சார்ந்த பையன். நன்றி, வணக்கம். Caxton, if you would. Anshu, Yuvraj, like Caxton has joined through Yuvraj. Yeah, his name is Kebiston. Yeah. He's from the fishing community. He's from Thoothukudi, Tamil Nadu. He has been working for the rights of the traditional fishers, called as the Nathal people of the coast of Tamil Nadu. He has been involved in protests, Kudankulam, Sterlite, and other protests. He was there, and he has his forum name called Nathal People Protection Forum. So that's it. Thank you so much for translating for us. If everyone has joined, I think we can begin right now. Meera, is there anything in Meera's? I think we can begin. Everyone's here. We have a lot to discuss today. So I think it's best if we... Yeah, can you guys hear me? Yeah. Yeah, hi, Caxton here. I think I had some technical trouble. I couldn't unmute. So, No. I think the first bit was done by someone else. So going forward, I'll pitch in. Yeah, sure, no problem. That's why we were warming up, just to see. Yeah. Ashwati, I think we can start our FB Live and then we'll take this. We'll actually start. Just let me know when we are ready, Anshu. Yeah, I'll let you know. Just give me a sec. Sure. All right. Good evening to everyone today. सभी को good evening. आज के session में join करने के लिए बहुत शुक्रिया. Thank you all for coming here and joining today's session, which promises to be a very engaging and very pertinent today, especially. Our session today is again, it's about the movements young people have been carrying against corporate crimes that have had environmental and humanitarian fallouts in the past few decades. पिछले कुछ सालों में, कुछ दशक में
जो बड़े कंपनीज है, जो कॉरपोरेशंस है, उन लोगों के कार्यवाही से जिस तरीके का नुकसान हुआ है लोगों की जिंदगी में, पर्यावरण में, उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। कैसे मूवमेंट्स चल रहे हैं उसको लेके भी बातचीत होगा। एंड लाइक मीरा हैज वेरी aptly pointed out, 38 years ago exactly to this day, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक्सप्लोजन के वजह से जो गैस ट्रेजेडी, which is one of the most infamous accidents, disasters to have happened in recent decades in India, which is also one of the biggest environmental crimes that have been committed by a big corporation, but that has gone completely unmediated, unpunished. Justice is still being awaited. We have today with us a few young fighters and activists from Niyamgiri in Odisha, जो लश्के सिकोका है हम लोगों के साथ नियमगिरी से, तमिलनाडु के थूथुकुडी से Kebiston, who has been involved in the anti-Sterlite struggle, anti-Sterlite protests, and also involved in quite a few other movements in Tamil Nadu. We also have with us Noihrit from Assam, Tinsukia, who will be talking to us about the oil rig explosion that happened in Baghjan in 2020, and the kind of fallouts that Tinsukia as a district has been facing, and also Dimapur as a whole because of oil rig activities. We also have with us Shanthi from Kerala, who has been active in Plachimada against the Coca-Cola corporation, basically. We were also supposed to have Nousheen with us today from Bhopal, but unfortunately she hasn't been able to join yet. We hope she'll be able to join us very soon, given the timeliness of the Bhopal disaster that we were planning to discuss today, where medical compensations, rehabilitations, none of it has been provided to the victims yet. State forces have essentially colluded with the Union Carbide company to put everything under the rug. And we will get to it in more detail as we go along our discussion. But I would like to sort of hand over the forum to our speakers today. I'd like to begin with Noihrit from Assam. If you could introduce yourself, and then we'll move on to Laskey, and then Kebiston, and then Shanthi. Yeah. So I'm Noihrit Gogoi. I'm currently pursuing masters in TISS Guwahati, but I'm not from Guwahati. I'm from Tinsukia, which is one of the easternmost part of Assam. It's where Baghjan and it's major oil fields that is being exploited. And I'm currently involved in a collective called People Ecology Network, and I'm also from Progressive Assam Society. Moreover, I'm working with ISA, and I'm involved in the movement of Baghjan for the people of Baghjan, which also incorporates people from the adjacent villages as well, like Notungao. And personally, I'm interested in topics like topics around development, around resource extraction, and indigeneity. And that's all from my side. Yeah, thank you. All right, thank you, Noihrit. Laskey, aap agar ମୋ ନାଁ ଲସ୍କେ ସିକୋକା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ା, ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର, ଜିପି ପାରସାଲି, ଆଉ ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ମୋର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ। ଆଉ ମୁଁ 2017 29 ତାରିଖ 4 ମାସରୁ ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଅଛି। My name is Laskey Sikoka. I am from Raigada
Kalahandi districts from Odisha, and I am from the Dongriakon community in Niyamgiri, and since April 29th, 2017, I have been involved in this movement, and I would be involved further as well. That's very, I wouldn't say that's good to hear, because ideally we shouldn't have been having to fight so hard for our basic human rights and dignity and a right to live a dignified life. But the fight must carry on. So we'll discuss your activities, how you've been involved in more detail. Next, if we could have Kebiston introduce himself. வணக்கம், என்னுடைய பெயர் கெபிஸ்டன். நான் தமிழ்நாட்டு சேர்ந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன். நாங்க இங்க தூத்துக்குடியில் நடந்த ஒரு 22 ஆண்டு கால போராட்டம், ஸ்டெர்லைட் வேதாந்தா குழுமத்துக்கு எதிரான ஒரு பெரிய மாபெரும் போராட்டத்தில் மக்கள் 15 பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். அது குறித்தான ஒரு முழு விரிவான ஒரு உரையை ஆற்ற நான் இருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். So yes, his name is Kebiston and he comes from Thoothukudi, and he has been part of various protests. Especially he is here to talk about Sterlite and the problems the people have been facing, or how what happened to the 15 people who were shot dead by the cops, and all the battles and the struggles that ensued since then. So yeah. Hello. Yeah, hi. ஒரு சின்ன திருத்தம், அது வந்து ஷார்ட் டெத்ல மர்டர், அரச பயங்கரவாதம். So he wants to clarify that it is not just shot dead, it is a murder, and it is a government orchestrated murder. So yeah, yes. That's sort of the thread we have today for everyone involved here, be it Niyamgiri, Thoothukudi, Plachimada, even Tinsukia and Bhopal. The kind of scale of the crimes that these corporations have committed wouldn't have been possible without state backing, really. Like, had there been state accountability, a lot of justice would have been meted out by now. And I guess that will be clearer as we move forward with our discussion today. I would like to start off the discussion with Laskey. Laskey से ही आज का बातचीत शुरू करेंगे कि नियमगिरी में जिस तरीके का वेदांता के द्वारा जिस तरीके का अत्याचार अन्याय हुआ है पिछले कई सालों से, उसके बारे में अगर बताएं आप लोगों का कैसा मूवमेंट रहा है, किस पॉइंट पे आके ये स्टार्ट हुआ है, कैसे इसका थोड़ा अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझा पाए. If Laskey can get us started with giving an overview of what went on, how things went on to come to this point where there has been a sustained fight for many years now. That would, yeah. तो जो नियमगिरी आंदोलन आज जारी रखी कि 2001 मसीह 2022 ही आसलानी कि वेदांत कंपनी जो नियमगिरी अंचल पहाड़ तले होगी 112टा गाँव अच्छी सेठी समस्त माने डंगरिया आदिवासी लोकंकर तांकर अत्याचार दुर्नीति जो पूरा सर्वहरा कांगाली करने को जो सरकार कंपनी जो बसीची कि तांको विरोध रे आमे समस्ते एक ही माने डंगरिया आदिवासी आमे आंदोलनटा जारी रखीचु. सेठी बहुत अन्याय अत्याचार कले कि एबे भी लद दादा आमर लद सिकोका आमर सभापति अछंती आउ तांको बहुत थरे एमती तांको पुलिस ने कि अत्याचार कले विभिन्न प्रकार माड धमक देले तथापि से सभापति लद सिकोका आज पर्यंत डरी नाहांती. मोर जीवन जाऊ पछे किंतु मो आंदोलन को छाड़ीबी नहीं आ मो जाति भाई मोर जल जंगल जमीन टाई नष्ट हबो तेणु मो आंदोलनटा जारी रखिबी कही लद सिकोका सभापति आज पर्यंत जारी रखिचंती. आमर जने
एमती नियमगिरी सुरक्षा समिति सहित जड़ित थिले आमर जो बारीपिड़ी काका तांकू जेल नहीं कि तांकू जेल रे मारी दिया गला आउ दासरू काड्रा कांकू जेल रे रखी देथिले 3 वर्ष आउ जणे साथी अछंती मेडिक माने जो सॉरी जो थाना रे 3 वर्ष होई आसिलानी ददी काड्रा का एबे भी जेल रे अछंती आउ एमती जे भी संगठन माने आंदोलन करछंती सेमानंको एमती दुर्नीति अत्याचार माने बहुत सेमानंको बिना मकदमा रूज करी सेमानंको जेल रे ठुंकी दिया जाउची तो मोर भी एमती मते बहुत थर एमती पुलिस गड़ेलेनी कि मते भी एमती जेल रे पुरेबाकू विभिन्न प्रकार कौशल करिकी किंतु मते पारु नांते तो राती अधरे मध्य आसिके जो सीआरपीएफ जवान जो राती रे आसिकी मध्य मो घरे आसी एप्रिल 2 तारिख दिन 2022 रे मते एमती मो घर भीतर को आसिकी मध्य मते खोजी आसे मो घर पथिले नहेले मते से दिन उठे के आस्ता एमती 3-4 थरो एमती घर भीतर को आसी लोकन को हैरान करछंती माओवादी नारे आदिवासी लोकन को एमती माओवादी आख्या दे सेमानन को अत्याचार करछंती जेल रे ठुंकी दे जाउची तो केते बेले गोली करी मार दिया जाउची ए प्रकार अन्याय अत्याचार करछंती सरकार तो तार विरोध रे हमें आंदोलन जारी रखिछु तो एबे जो हमर जो जारी रखिछु के आदिवासी लोक माने जल जंगल जमीन बिना कहीं बंची पारिबेनी खाली आदिवासी तो नो बहुत माने समस्त मनीष मनीष सब सब लोक मनीष किंतु जल जंगल जमीन प्राकृतिक खनिज बिना कहीं बंची पारिबेनी सेति पई हमर गछ आ जल जमीन कोन दउछि लोकन को कोन उपकार करूछि ता विषय को भाबी आमे भविष्य रे हमर खनिज प्राकृतिक संपद जो जल जंगल जमीन को आमे बंचे रखिले ही हम भविष्य पई काम रे आसीबो बोली आमे ए आंदोलन ता जारी रखिछु ए जो वेदांत कंपनी जो ए देशर खनिज प्राकृतिक जल जंगल जमीन को लूट करी नेबा पई एटा प्रयास जारी रखिछि आ एबे वर्तमान जो युवक युवती को शिक्षा ना रे सेमानन को जो विनाश रो खेल चलैछि कि शिक्षा विभिन्न माने जो शिक्षा दउछि कि समस्ते तांको हाथ रे नै कि आदिवासी लोकंकर जल जंगल जमीन को टेकी देबार ए उद्देश्य को नै कि तांको हाथ रे पाठ पढाउछि जो कि आदिवासी लोकंकर जो जल जंगल जमीन को तांको हाथ रे अति सहज रे नै जिबा पई षडयंत्र करी पिला मानन को पाठ पढेबा ना रे ए प्रकार जारी रखिछि Rajan, I'm good. Yeah, should I just translate? Yeah. Okay. So the Niyamgiri movement began in 2001. Since the time 2001, the Dongriya community has been fighting the Niyamgiri movement, and Vedanta has been trying since then, trying to mine Niyamgiri, which is very sacred to the Dongriya community, is very sacred to us. And there are more than 112 villages who live across the mountains in Niyamgiri. And since then, we have been fighting to save our sacred land as well as our Niyamgiri mountain. And Lodo Sikoka, who is the president of the Niyamgiri Surakhya Samiti, since the time of 2001, has been tortured many times under police custody, has been taken into detention, has been threatened many times, has been put in jail many times, has been threatened of being killed by the Vedanta goons and police. But Lodo Sikoka every time has sort of kept his courage of himself as well as of the community, that he would let his life but then never allow Vedanta to mine the Niyamgiri mountains or the spirit of the people to fight back against Vedanta. And then there have been a series of leaders who have been tortured and even killed by the company and state in nexus. So Bari Pidikaka is one of the elder leaders who is no more. He's a martyr now of the Niyamgiri movement. He was taken into custody and was locked up in jail for months. And in jail custody itself, he was killed. And then there was the Dasru Kadraka, who under the government named him as a Maoist and then locked him up in jail for more than 3 years.
and still we have a comrade from Niyamgiri Surakhya Samiti who is in jail. His name is Dodi Kadraka. It's been 3 years now. And one of the things that Laskey is saying that all of these leaders have never had trials and they have allowed to languish in jails, all because that we are fighting for our fundamental rights. Land, forest, mountains and rivers are ours, and we have the responsibility to protect it. And when we say this, the government targets us as Maoists. This is the nature of the state corporate nexus. And now, at this current stage, the youth, particularly in Niyamgiri, are being swayed away in the name of education. There is a slogan that in Niyamgiri, Laskey and all, or many youth people say, it's called Sikhya Nare Koruchi, Sikhya Nare Podeuchi Binas Pat Bikas Patho, Sarkar Amo Mananku Koruchi Binas Nato. It means in the name of education, it's teaching us development. And in the garb of development, it's destroying the future of the youth. So, so that has sort of now there are many schools and residential schools and many programs that Vedanta themselves offer, and the government is pushing the Dongriakon community into education. But the Dongriakon community has been strongly demanding for an education in their own language, in their own villages. So that has been always kept aside. Do we have more time? Can you say more? Yeah, or do we stop here? please. If there's anything else you'd like to say, please go ahead. तो एबे जो सरकार जो चलेछंती सरकार आ कंपनी एबे जो विकास ना रे जो विनाश रो नाटो जो चलेछंती कि पिला मन को किछि कंपनी जो अंचल खणी अछि से अंचल रो पिला मन को किछि स्कूल रे नै कि सेमान को निज भाषा संस्कृति वेश आ निज पूजा पर्वण भाषा को मध्ये माने पढो नांती जेहेतु आदिवासी लोकंकर भाषा आ संस्कृति परिवेश में जो बेस एटा रहिले ही गोटे आदिवासी रो परिचय रहिबो एटा को मध्ये सरकार चाहू नांती कि ए विशेष को पढेबाकू तो आमे चाहू कि 62 प्रकार आदिवासी रो स्वतंत्रता मान्यता दिया जायछि तो सरकार आज कहूच माने कहउछंती कि आदिवासी भाषा सहित कथा होनी किंतु निज भाषा होछि निज मातृभाषा होछि निज पई बड़ किंतु से जिनिस को आज कहबाकू से माने चाहू नांती कि आमो भाषा ही समस्त कहंतु एमति तो किछि न कि आमो भाषा होछि आमरो मु जो ओडिया कहूची एटा भी आमो भाषा नो एटा मोर मातृभाषा नो मो मातृभाषा होची कुई मोर मु आदिवासी रो छुआ किंतु मो मातृभाषा होची कुई किंतु सेति पई आमे गोटे शिक्षा अनुष्ठान गोटे माने गोटे कमिटी हॉल तयारी करिचु कि सेमती आमो डंगरिया भाषा सहित पढा हबो आ आमो डंगरिया लोकंकर भाषा रे पढा हेले निजो पिला माने किंती अति सहज रे से माने शिक्षित माने विकास हेई पारिबे से विषय को नहीं आमे गोटे हॉल कमिटी हॉल टे तयारी करिछु तेनु जो विकास जो सरकार कहउचंती विकास रो परिभाषा कोन डंगरिया आदिवासी माने बुझी पारि नांती विकास रो अर्थ होची कंपनी लोकंकर जो जल जंगल जमीन प्राकृतिक खनिज आ पहाड़ पर्वत को माने विदेशी कंपनी हाथ टेकी दउछंती जोर जबरदस्ती जो फैक्ट्री कारखाना गुडा को जो बनौछंती सेटा होची सरकारन को पई विकास आ खनि कला विस्थापन को विकास बोली सरकार कहउचंती सेटा आमे चाहुनु किंतु आम विकास होची जल जंगल जमीन प्राकृतिक खनिज संपद सहित हमर भाषा संस्कृति सहित हमर शिक्षा हेबा दरकार आ सेटा होची आमानकर विकास आ टांगिया जो आम व्यवहार हमर अस्त्र माने आ जो हमर परिचय होची टांगिया सेटा हमर व्यवहार करके आमे चलो जो काठ के जे माने दरकार जिंस गुडा को आमे हानुचु तो सेमती आमे जो स्कूल रे पढिबा को जाउछु कि माने जो सरकार स्कूल रे माने जाउछु कि माने जे कोनोसी बाहर स्कूल हो कि सरकार स्कूल हो कि प्राइवेट स्कूल रे हो आमे पढिबा को जाउछु से समय रे कहउचंती तमे ए बेसरे आसनी आ निज बेसरे जदी जे पढिबा को जाउची निज परिचय नै कि जाउ माने जाउची स्कूल को पढिबा को जाउची से समय रे मास्टर माने कहउचंती कि एटा बेस ए बेसरे आसनी पाठ पढनी कहउचंती तो अन्य भाषार लोक माने निज पैता पिंदी कि मध्ये जाउछंती स्कूल रे पाठ पढुछंती
आउ निज जो अस्त्र जो माने ये करूछंती गणेश पूजा सरस्वती पूजा जो करूछंती एटा होची तांकर किंतु आदिवासी मानकर गणेश पूजा सरस्वती एटा आदिवासी मानकर पूजा न आदिवासी मानकर पूजा होची प्राकृतिक जो मानुछंती जे कि हमकु खाइबा को दोची पानी गच्छ पत्थर आउ जो पहाड़ पर्वत एटा होची प्राकृतिक देवता बोली आमे मानुचु आ तांको आमे प्राकृतिक देवता भाबरे आमे मानि तांको आमे पूजा करूचु टांगिया होची हमर प्रतिरोध आ प्रतिवादक एटा को आमे नै हम परिचय एटा Rajan, yeah, translate it. Now what is the government trying to do in the name of development? Whatever their understanding of development is to loot the resources. Without looting of resources, they don't understand the meaning of development. But Adivasi philosophy is not like that. Adivasi philosophy, wherever there is in a certain geography, there is mountains, rivers, streams, forests, agricultural land, and people and animals and birds. All of these are interconnected. Whenever there is a thriving of this geography, this ecosystem, then we call it development. So until the government tries to understand this language, we will always oppose development. And there is one more important thing that Laskey also said in this is also this whole ecosystem also includes the language and identity. Without the language, today he's saying that now I am speaking to you in Oriya, but Oriya is not my mother tongue. Kui is my mother tongue. I am speaking to you in Oriya because there is a stupid translator who doesn't understand so much of Kui. So that is the reason he's speaking in Oriya. So he's saying that why are in say suppose let's think about schools. So in schools they are all teaching us about development, and these companies are trying to say that we have to come to the mainstream, but we don't want to come to that mainstream. We have seen enough of how the mainstream lives and what has happened to that mainstream. If for example in a school they don't allow us to carry our culture and language, so they ask our children to remove all the jewelries that we wear. They ask us to cut our hair short. They don't allow us to take the axe along with us, which is one of our identities. But this doesn't happen to a Hindu community. Brahman can always wear a thread around his chest and go to the school. They will celebrate Saraswati Puja. They will celebrate Ganesh Puja. Everything they will celebrate. But whenever it comes to Adivasi identity, they will say, with this, you cannot enter our school. So Laskey is saying that axe that we carry in our shoulders, we have used it for two purposes throughout the history of Adivasi communities in Niyamgiri. It has always helped us for Pratibad and Pratirod to debate and to protest. Yeah. Protest. So how can we leave that? The rest of the society has always हमको धोखा दिया है. But Tangia जो बोलते हैं, Tangia has always stood our side all the time. So without that we need a Tangia kind of education, where all this what we worship sacred, our sacred mountains, rivers, all of this can be protected, and everybody, even the animals, the entire ecosystem can thrive. Can we think of such an education? For that, in Niyamgiri, we have decided to start a Niyamgiri Kutum Kendra, committee learning space. So we are trying forward to bring such sort of education in Niyamgiri. Thank you so much, Rajan और लश्के. बाकी लोगों के लिए मैं थोड़ा हिंदी में भी इसको संक्षेप में रख दूं. लश्के ने जो भी बात रखे हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स है. एक तो जो जिस तरीके का सरकार और कंपनी मिलके जिस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट में शोषण करने के काम पे लगे हैं,
विकास के नाम पे, जिन लोग जहाँ पे विकास का मतलब यहाँ मतलब सरकार के लिए जो विकास है उसका असली रूप में मतलब यही है कि जो भी प्राकृतिक खनिज है, पदार्थ है, साफ हवा, साफ पानी, सब कुछ चोरी करने का ही जो मकसद रहा है, और कॉरपोरेशंस के थ्रू जो सरकार अपने लिए ये सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट जिस तरीके का संघर्ष लगा के रखे हैं आदिवासी समुदाय बोलिए, नियमगिरी के जो बहुत होली लैंड है इन लोगों का, उस पे जो जिस तरीके का क्लेम रख रहे हैं सरकार या ये कंपनी, उसके अगेंस्ट ये काम चला रहे हैं सब। और बहुत जो लश्के के बाद से जो पता चला पिछले 20 सालों में, जो फाशीवादी कार्यवाही पुलिस के थ्रू चलाए जा रहे हैं, इन लोगों के समुदाय के जितने भी लीडर्स हैं, बहुत लोग मार्टर भी बने हैं ये संघर्ष में, और इनमें से किसी को कोई भी जुडिशियल लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं मिला है, किसी को कोई ट्रायल नहीं हुआ है। तो इस तरीके का जितने अलग अलग तरह के भेदभाव, अलग अलग तरीके का इनजस्टिसेस है, उसके अन्याय जो भी है, और इसमें एक जो बहुत सेंट्रल पॉइंट है वो शिक्षा का बात है, क्योंकि जो सरकार का जो मेन स्ट्रीम शिक्षा है उसमें आदिवासी जो फिलॉसफी है, बहुत सुंदर तरीके से लश्के ने हम लोगों के सामने बात रखी है कि विकास तभी होगा जब पूरा जल, जंगल, जमीन, भाषा, आइडेंटिटी सब थ्राइव करेगा, सब का विकास वहां पे ही माना जाएगा। वो सब सोच विचार से मेन स्ट्रीम एडुकेशन दूर लेके जा रहा है सबको। तो उस सिचुएशन को फाइट करने के लिए भी नियमगिरी में अभी एक लर्निंग कमेटी बनाने में लगे हैं, ताकि अपने भाषा में अपने पहचान के बारे में और अवेयर हो पाए, और ये जो संघर्ष है उसको अपने हिसाब से अपने तरीके से आगे बढ़ा सके। इसके बाद हम नोहिरित के पास जाएंगे, असम में तिनसुकिया में 2020 से जो ऑयल रिग एक्सप्लोजन से जो दिक्कतें आई है उसके बारे में सुनेंगे, और थोड़ा हाँ। Yeah, so when we talk about Baghjan, we generally mean the Baghjan incident, which is the Baghjan well number 5 located in Baghjan village in Tinsukia district. It suffered a blowout on May 27, 2020, which eventually caught fire on June 9th. The fire continued ravaging the entire area of Baghjan for almost 6 months. During this period, the complex ecosystem of not only humans but also non-humans were damaged beyond repair. Because you see, Baghjan is located at a very fragile location. Towards its north, there's Brahmaputra, and also the foothills of the eastern Himalayan range. To the south, there's Patkai range. To the right is the Lohit Valley of Arunachal. So in this fragile ecosystem, it's very crucial to have certain norms, certain conditions that the state has to follow. But the Baghjan incident has showed us how the state completely neglected all norms, all considerations, and as a result, the Baghjan incident happened, which they call it as an accident, but it is not. During the period of 6 months, 10,000 people were relocated to refugee camps. There were 10 refugee camps, and we should also remember that it was a time of COVID. So cramping 10,000 people in those 10 refugee camps was a huge health risk factor. Moreover, an estimate of around 1,600
hectares of croplands were damaged, farmlands were damaged, trees, and also, and like I said, the crucial fragile ecosystem of Baghjan. There's also Dibru Saikhowa National Park and Maguri Motapong Bill, which is one of the internationally acclaimed birding area. So threatened species of birds and animals also are to be found there. But during those 6 months, there were no migratory birds, and there were carcasses of threatened animals species. And most of all, the people who were mostly dependent on agricultural, on the agricultural sector, mostly subsistence farming, were harmed. You see, now Pollution Control Board of Assam then sent a show cause notice to Oil India, saying that there were no prior approvals for construction, for even constructing the oil wells. That happened in 2003. The first oil well in Baghjan happened in 2003. And now there are around 25 oil wells around Baghjan oil field, which comprises not only the Baghjan village, but there are Notungao, Rangagora village, Baghjan, Guijan, and etc. But Oil India replied saying that we have filed for consent, and that NGT and that they did not reply, so they continued with their program and they're ready to pay penalty. Pollution Control Board asked them to shut down their operations, but they said they will pay penalty, so they're still continuing their oil extraction. I just want to, sorry to interrupt, I just wanted to clarify, when you said that the government said that Oil India had no prior clearances and they didn't follow they did not. The norms. So is this from like 2003, or is it just a cop out, or can you just like sort of elaborate on that situation? Because if it's from 2003, that's a really long time to be functioning at this scale without. Surprisingly, it's from 2003. They had not followed any norms. There were no prior consent for construction or drilling of oil, but somehow they managed to do it. And when they were asked to shut down, they said that they'll pay penalty, the penalty cost, they'll pay compensation, and they are now continued to be allowed to extract oil. So and we see the collusion of state forests, the bureaucracy, the state and Oil India. When we see the logic of ESZ, so ESZ is eco-sensitive zone. ESZ is sort of a buffer zone between a forest area, between maybe a national park and the rest of the area. So, but when we see ESZ, so Baghjan falls in that ESZ area. So, but when we see the pattern of ESZ, it's in a zigzag area. It's produced by the forest department. It's a zigzag line, which is supposed to be not a zigzag line. So in that circular area, it's zigzag because in those curves, there are oil wells. Those are oil wells. So they have meticulously carved out the area where there's oil wells. So we see the collusion of various state institutions, the bureaucracy, and Oil India corporations, and also, of course, private agents like John Energy and others. So because it was an MNC based on Gujarat, which was commissioned to extract oil in Baghjan oil well number 5, where the blowout happened. So they were paid compensation. The first plan was to divide the affected people into 3 groups: those that were extremely affected, and so on. But it later formed that 2 groups were to be formed. But even then, the question of compensation doesn't come, because when you displace such amount of people, when your livelihood is attacked, you're forced to migrate to different places, and most of all, you're forced to become a laborer, because you were initially an agriculturalist, you were a farmer, but now because there's no land, you're forced to sell your house, you're forced not to come back to your native place and go migrate somewhere else and be a laborer.
that also helps in some way in the expansion of corporates. And sorry. So a committee was formed under the instruction of Supreme Court. It was led by Kotoki, who was the former judge of High Court. So the report published by that committee actually showcased very meticulously the various norms and everything that was overlooked, that were dismissed, that were bypassed by Oil India Limited in construction those wells, and also during their extraction. For example, when the accident happened, interestingly, there was no protocols laid which would deal with an accident, which they call it as an accident, but they're supposed to have a protocol that would help mitigate if in case an accident occurred, which it did according to them, but there was no protocols. Moreover, to mitigate the post blowout effects, the CSR wing of Oil India also launched certain projects like planting trees, cleaning up the area, but of course those were not effective at all. So the locals have been protesting oil exploration and the incursion of Oil India into their paddy fields, into their farms, into their villages since 2003, and even before 2003 elsewhere, and 2003 in Baghjan. But there were but using certain tactics, Oil India Limited were able to acquire land. For example, there's this word called kerahi khad, which means well of utensils. So what Oil India Limited did was they circulated a rumor saying that any place and any house that had housed oil in their in their campus, that was to be treated as a blessing of God. So people became very excited and reported oil to Oil India Limited, and also coming back to Kerahi Khat. So there was a rumor saying, so in Baghjan, in those villages where communities mostly of Moran, Motoks, and also Ahoms, what they do is when someone passes away, they host a grand feast, inviting not only their villagers but people from outside villages as well. So they require a huge number of utensils. So what oil spread as a rumor was that oil provided. So this is a continuing story that goes on in Baghjan. So what oil did was they provided around 1,000 utensils to Baghjan, so that they can continue with their rituals and everything. And this was applauded, but the thing is, nothing of this sort happened. It was just a rumor that even now circulates in and around Baghjan. So using such informal ways, these are not state sanctioned ways of acquiring land. Such informal ways of acquiring land were used by Oil India Limited, and where resistance actually occurred. For example, in Barikuri, which was one of the first places where oil well was dug in Tinsukia, youths were primarily involved in resisting Oil India Limited, but using police, using various state actors like police, CRPF, and army. And we'll also have to keep in mind that Tinsukia is a highly militarized area. So when people resist, they are always targeted as someone from the armed organizations, armed political groups, or someone as a Maoist. So there are even now people living in Baghjan, living in Barikuri, that were termed as Maoists, that were termed as Alpha, who were taken away by army, tortured, and jailed. But the thing is, we cannot see it we cannot see the incident of Baghjan as an accident, as an isolation, or as an abnormality. We'll have to locate it
to the ongoing extractive economy that is being followed by the Indian state with regards to the Northeast. So if we quickly go back to the history of it, so the colonization of the Northeast of Assam started with the discovery of tea. So and almost all infrastructures like road and railway, along with industries like coal and oil, were sort of industries that would support the tea industry. But one second, there's the lecture. I'll just switch off the camera if that's fine. Yeah, don't worry about it. Just Yeah. Okay. So yeah, you can see the state of infrastructure now. So anyway, so as I was saying, oil industry and coal industry were started as a support of the tea industry, and with independence, with the nationalization of Oil India Limited, of Oil India Limited was formed. It was a joint venture between Burma and India initially, but then India took hold of it entirely and started mining and started oil exploration in the upper Assam area that where Tinsukia falls. And and this was a nexus between state and corporates. Military was used. The area is still under AFSPA, which allows the army to indiscriminately act without any repercussions, without any threats by the people, because as and when people resisted, they were termed as Maoists, they were termed as people from AFSPA. But this was not the case till 1970s or the 80s, because it was seen as a sort of coming of development, because there were this excitement of independence, there was the excitement of being developed in quotes. So but in 70s and 80s, the delusion started to come in. The self-determinist movement started, and people started becoming aware, and it was realized that Northeast or Assam was a resource frontier as well as a settler frontier as well. So this huge self-determinist movement started, along with which was supported by armed political movements. That and ethnic conflicts began to flare up, and these ethnic conflicts were promoted by politicians, were promoted by the state and corporates to keep the vicious cycle of conflicts going. Because you see, when paddy fields, when agricultural fields were taken up by the tea industry, by the other corporates, by the other PSUs like oil and coal, people were left with no field to farm. And with neoliberalism, with the idea of neoliberalism, the profits of homegrown farmsteads came down, and therefore they had to migrate to different places. They had to seek employment in Oil India, they had to seek employment in coal industries, and which was a direct confrontation between migrants that were taken that were that were taken in by the Oil India Limited or the coal industries. And this tension between different conflict was promoted by the state as well, so as to keep the vicious cycle of conflict going, and to continue with their plan of so-called development that displaces the local people, where we don't see any consequence of development, rather than, I mean, positive consequence of development. We only see the negativities of it. And yeah, that's what's happening in Baghjan as well. And as for the movement that is happening now, we are trying to go in a judicial way, while simultaneously building a movement, but on ground. But the thing is, as I have mentioned, it's a highly militarized area, and the risk factor is very high as well. And there's also an elite group working there with the help of state sanctioned and state supported political parties. So it becomes a very complex junction that we have to tackle. Well, we're doing it. Yeah. थैंक यू नोहिरित, बहुत मतलब लश्कर के बातों के साथ भी आपका
आपने जो कहा उसका बहुत सारा कॉमनैलिटीज है, बहुत एक ही तरीके के प्रॉब्लम्स है ये, मतलब रिसोर्सेज का नाम बोले का बात बोले या जो सरकार के तरफ से जिस तरीके का शोषण को लेजिटिमाइज किया जाता है वो सब जगह में कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है। तो बहुत संक्षेप में इसको अगर हम रखें हिंदी में तो असम में जो ऑयल कंपनीज है वो 2003 से कोई भी क्लियरेंस के बिना ऑयल एक्सट्रैक्शन में जुड़े हुए हैं और 2000 हाँ बागजान में स्पेशली और 2020 में जो ऑयल रिग एक्सप्लोजन हुआ था बागजान में उसके बाद सरकार की तरफ से ये पता चला कि कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए थे, जिस तरीके का क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए वो कुछ भी नहीं हुआ था। बस ऑयल रिग्स बनाए गए और शायद ये एक्सप्लोजन नहीं होता तो ये बात भी शायद सामने नहीं उठ के आती। और जिन लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया गया उठाया गया जबरदस्ती से उन्हीं की जमीन में उन लोगों को मजदूर बनाया गया और एक्सीडेंट होने पर भी कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया जा रहा है। अभी भी जैसा का है वैसा ही काम चल रहा है, कॉम्पेंसेशन और ये सब का बातें चलती रहती है पर लोगों के पास अभी तक कुछ पॉजिटिव उठ के आया नहीं है कॉम्पेंसेशन के तौर पे या कोई प्रोटोकॉल का चेंज होने में। और उसके ऊपर से जो CSR का जो मुखौटा चला के रखे हैं सब कि ठीक है एक्सीडेंट हुआ तो उसके नाम पे कोई कुछ पेड़ लगाए गए या फिर जैसे यहाँ पे नोहिरित ने बोला जिस इनफॉर्मल तरीके से इन लोगों का लैंड को लिया गया कि र्यूमर फैलाए कि जिसके घर में ऑयल निकलेगा वहां ही भगवान है ऐसा माना जाएगा और यही करके सब बागजान में सब खुद से ही रिपोर्ट करने लगे कि उन लोगों के घर में ऑयल है और इसी तरह इनफॉर्मली ऑयल इंडिया कंपनी ने ये लैंड प्रोक्योर किया और ये करते करते खेत वाले जो हिस्से हैं वहां पे भी एनक्रोचमेंट हुआ। और फिर जो लास्की ने भी कहा सब जगह में जो भी आवाज उठाता है उसको माओइस्ट बोला जाता है या जैसे असम में तिनसुकिया बहुत हैवीली मिलिटराइज्ड जोन है, आफ्सपा का भी वहां पे जुरिस्डिक्शन है तो वहां पे अल्फा के मेंबर्स भी बोले जाते हैं। और जैसे ही सब जगह में जो आदिवासी एरियाज है या फिर जो बॉर्डर में जितने भी हम लोगों के हेविली मिलिटराइज्ड जोन्स है वहां पे पुलिस वायलेंस, स्टेट वायलेंस कोई लिमिट के बिना ही चलाया जाता है। लोगों को आवाज उठाने में भी इसीलिए शायद डर लगता है कि कभी भी कहीं भी गोली चल सकती है या जेल में डाल के टॉर्चर करके कोई कुछ कहने नहीं वाला है, कुछ मतलब इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल रहता है ऐसे सिचुएशन में। और ये एक और जो चीज नोहिरित ने भी कहा, लश्के ने भी लश्के के बाद से भी जो उठ के आया कि जो वायलेंस का जो हिंसा का जो साइकिल है वही साइकिल में फंसा के लोगों को रखना ताकि विकास के नाम पे स्टेट और कॉर्पोरेशंस अपना बेनिफिट उठा पाए। अब हम केबिस्टन के पास जाएंगे। केबिस्टन, if you would also like to talk about the situation in Thoothukudi and your participation in the movements. Kebiston, you're on mute. Yeah. Kebiston நீ மூட்ல இருக்க. பேசு பண்ணு. நான் பேசுறதுக்காக டைம் விட்டியா? முதல்ல போபால் விபத்துல மரணமடைந்த
பல்லாயிரம் உயிருக்கு தூத்துக்குடி மக்களின் முதல்கண் வீர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். So he wants to pay his respects to all the lives that were lost in Bhopal and the gas tragedy. இந்த ஸ்டெர்லைட் வேதாந்தா குழுமம் முதல் முறையா இந்த காப்பர் உற்பத்திக்காக இந்தியால சூஸ் பண்ண மாநிலம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துல இருக்கிற ரத்னகிரி என்கிற ஒரு பகுதி. அந்த பகுதி முழுக்க மல்கோவா மாம்பழம் கொஞ்சம் செழுமையா வளர்ற பகுதி. அங்க அந்த மக்கள் அந்த தாமிர உருக்காலைய புரிந்து கொண்ட மக்கள் அதை கடுமையான போராட்டம் செய்து அந்த மண்ணில இருந்து அடித்து விரட்டப்பட்டு அதன் பிறகு இந்தியா முழுக்க எந்த இடத்தில் இந்த வேதாந்தா இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை வைக்கலாங்கிற பாக்கச்சில இந்தியாவின் தென்கோடி முனையான தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி கடல்வெளி போக்குவரத்து 4 போக்குவரத்து கொண்ட தாமிரபரணி நதியை மையமாக கொண்ட இந்த தூத்துக்குடி மாநகருக்கு 1994 அன்றைய ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் சார்பில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இந்த தூத்துக்குடிக்கு வந்தது. So Sterlite started off with the Vedanta group when they wanted to go on a hunt to find out a place. They first went into Maharashtra and I think Rastagiri is the name of the place. So where they tried to do their copper smelting factory, there was a lot of protest from the local population and the leader, the political parties were also probably supportive of it because they couldn't establish their factory there, even though they had an agreement and everything, but they couldn't go ahead. The second choice fell upon where they targeted was Thoothukudi, and Thoothukudi being a port town, it was easy for them to ship their goods and water rich, especially Tamirabari. It's one of the rivers that supports Tamil Nadu, especially the southern districts of Tamil Nadu. So targeting the water and the connectivity, and Tamil Nadu had good roads and everything, so it was a natural choice for them to move here. So 1994 இந்த ஆலை எங்க மண்ணில் அடிக்கல் நாட்டச்சில நான் பிறக்கவே இல்லை. எங்க முன்னோர்கள் எல்லாருமே 1994 இருந்து 96 கட்டுமான பணி நடக்கிற வரைக்கும் கடுமையான போராட்டங்கள், சாதி மதம் கடந்த ஒரு கடுமையான போராட்டம் என் தூத்துக்குடி மண்ணில் நடந்தது. அதிலும் குறிப்பாக இந்த மீனவ மக்கள், கடற்கரையோர மக்கள் இதன் தாக்கத்தை இதனின் சிக்கலை உணர்ந்து கொண்ட மக்கள் தொடர்ச்சியான பலவிதமான போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர். அதில் இந்தியா உலகம் முழுக்க எங்கும் நடைபெறாத அளவில் ஒரு பெரிய போர்ட் துறைமுகத்தை தூத்துக்குடியில் இருந்த மாபெரும் துறைமுகத்தை இங்கு இருக்கும் மீனவர்கள் ஒரு 100க்கும் மேற்பட்ட படகுகளில் முற்றுகையிட்டு வரலாற்றில் முதல் முறையாக வந்த கப்பலை திருப்பி அனுப்பிய ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு இந்த தூத்துக்குடி மண்ணில் நடந்தது. So this when they came into Thoothukudi, this was in 1994 under the governance of AIADMK party, and from 94 to 96 he's what he also wanted to register is the fact that he was not even born then. But in 94 to 96 there have been solid protests by the localites against the construction of the facility, and one of those solid moments was more than 100 fishermen took their boats and challenged a vessel that wanted to enter the Thoothukudi harbor, and they actually successfully got the ship to go back. Yeah. அப்படிப்பட்ட போராட்டங்களை நீத்து போறதுக்காக அன்றைய ஆட்சியாளர்கள், அன்றைய அரசு இயந்திரம் ஒரு திட்டமிட்ட வேலையை செய்து அன்னைக்கு முழுமையும் இருந்த அரசியல்வாதிகள் அந்த ஆலையிடம் விலை போயினர். அதன் பிறகு அந்த ஆலை தரப்பும் அன்றைய அரசாக வந்த டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டும் இணைந்து ஒரு தேர்தல் எலெக்ஷன் நேரத்துல ஒரு மாபெரும் சாதி கலவரத்தை என் மண்ணில் உருவாக்கி இந்த மண்ணை பிரித்து இந்த போராட்டத்தை நீத்து போறதுக்கான எல்லா வேலைகளையுமே இந்த வேதாந்தா குழுமமும் இங்க இருந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு துணையா இருந்த எல்லா அரசியல்வாதிகளும் இதை முதல் வேலையா செஞ்சு
அந்த ஆலையை இந்த மண்ணில் நடக்கிறதுக்கான தொடக்க புள்ளிய இந்த தூத்துக்குடியில இருந்த அரசியல்வாதிகளும் இந்த அரசு இயந்திரமும் செய்தது. So again, like in many other places, here what had happened is this was the protest was initially taken over or accepted by almost everybody in the community, and irrespective of their caste and creed. But during the protest or during the 96 times, the DMK government, when they came to power, be it DMK or ADMK or for that matter any other politician, they were almost all of them were unanimously sold out to the Vedanta group, and Vedanta took it upon themselves to ensure that they had the politicians in their hand and ensure that somehow they create a ruckus within the communities. So what it transpired was a big during the election time, a big communal clash. It turned out to be a big communal clash, and that was the first victory for Vedanta, because that broke down the whole movement that was gathering momentum against the Vedanta group. ஆனாலும் அந்த போராட்டம் இங்க வந்து தொடர்ச்சியாக 1996 2013 வரை, இன்று 2018 வரை அந்த போராட்டம் அந்த ஆலை மூடும் தருவாய் வரை நடைபெற்றது. இங்கு இருந்த சமூக ஆர்வலர்கள், இயற்கை ஆர்வலர்கள், இந்த வேதாந்தா குழுமத்தின் சூழ்ச்சியை உணர்ந்தவர்கள் நீதிமன்றம் மூலமாகவும் இங்கு ஒட்டுமொத்தமாக மக்களிடம் தொடர்ச்சியான பரப்புரையிலும் ஈடுபட்டு கொண்டே வந்தனர். So irrespective of this move by the Vedanta and in hand with the politicians, there have been activists and individuals who have been, or collectives who have been trying to take the message of what damage Vedanta has been doing, and especially this copper smelting factory can do to the ecosystem, can do to individuals. They have been talking about it and they have been going at it till the last moment, until the recent shootout and everything happened in 2018. அந்த ஸ்டெர்லைட் குழுமம் இந்த மண்ணில் ரொம்ப இந்த விரட்டப்பட வேண்டும் என்று ஒட்டுமொத்த மக்களும் உணர்ந்த காலம் என்பது 2013 மார்ச் 23 அன்னைக்கு ஒரு மாபெரும் விபத்து நடக்கு. அதற்கு முன்னாடி பல விபத்துக்கள் நடந்திருந்தாலும் மூடி மறைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் போபால்ல எப்படி ஒரு விஷவாயு கசிந்து 1000 உயிர்கள் இறந்தார்களோ அதுக்கு குறைவான ஒரு விபத்து இந்த மண்ணில் நடந்தது. அன்று காலை நாங்கெல்லாம் கடற்கரையில நின்று கொண்டிருந்தோம். அதிகாலை 6 மணி இருக்கும். அங்கிருந்து சல்பர் அந்த ஆக்சைடு பரவி இங்க தூத்துக்குடியில 100க்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகுறாங்க. அன்னைக்குதான் இந்த மக்கள், இங்க இருக்கிற ஒட்டுமொத்த மக்களும் மீண்டும் இந்த ஆலையின், இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையோட கொடூரத்தை, இந்த ஆலை செய்யற பாதிப்புகளை மக்கள் முழுமையா உணர்ந்துக்கிறாங்க. ஆனால் இங்க கேன்சர், இங்க பல வகையான நோய்கள், இங்க தொற்றுகள் பரவுனாலும் மக்கள் இந்த ஆலையின் தாக்கத்தை உணர்ந்தது தொடக்க நிலையிலேயே 94 உணர்ந்திருந்தாலும், ஆனா வீரியத்தை மக்கள் பார்த்தது 2013 மார்ச் மாசம். அந்த மார்ச் மாசம் நடந்த விபத்தை இங்க இருக்கிற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இந்த ஆலையில இருந்துதான் இந்த சல்பர் இது வெளியானது, இங்க இருந்துதான் இந்த பாதிப்பு உருவானதுன்னு சொல்லி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தொடக்கத்துல கொடுத்தாங்க. அதன் பிறகு அது முற்றிலும் மறைக்கப்பட்டு அதை ஜீவோவா இல்ல அரசு இதெல்லாம் அதை வெளியிட மறுக்கப்பட்டது. ஆனா அதை இன்றைய வரை அது இயற்கையா உருவான ஒரு விபத்து மாதிரி காட்டப்படுது. Okay, so this even though people were activists have been talking about the potential ill effects of Vedanta and the copper smelting factory, the people actually woke up to the real pain of it, like what happened in various other areas as well, especially in Bhopal. It was a gas leak. Here it was a sulfuric oxide. So sulfur oxide was released on I think it was accidentally, they didn't expect it to release,
go out in that kind of a volume, at least, because it had happened on 2013 March. I think the date was 23rd, at around 6 a.m. in the morning. Everyone around the copper smelting factory could, or the mostly fishermen community, they could feel that tench, the copper tench, odor of copper, odor of sulfur dioxide. And more than 100 people had to be taken to the hospital on that morning. And the collector, in fact, actually initially declared that Vedanta or Sterlite factory was responsible for it. But then later, even the collector, jumped sides, and he took back his statement, or the government kind of came up with a statement saying that, oh, that was not a government approved statement. It is something that we are investigating, and we would have to investigate and find out, and got Vedanta off the hook. So yeah. இந்த ஆலை வந்து இந்த விபத்துக்கு முன்பாகவே பல வகையான சின்ன சின்ன விபத்துகள் அந்த ஆலையில நடந்து அது மறைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா ஒட்டுமொத்த மக்களும் இந்த விபத்து வந்து ஒரு ஆணித்தனமா மக்களோட மனசுல பதிஞ்சுது. அதன் பிறகு வந்து ஆலை நீதிமன்றத்துல உச்ச நீதிமன்றத்துல 2 முறை போய் அதுக்கு வந்து ஒரு 100 கோடி ரூபாய் வந்து டெபாசிட் பண்ணணும் இந்த பாதிப்பு குறித்து அப்படின்னு சொல்லி இது மழுங்கடிக்கப்பட்டு மீண்டும் அன்றைய கவர்மெண்ட் இருந்த ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் 2013 பூட்டி திருப்பி 3-4 நாள்லயே இந்த ஆலையை மீண்டும் திறக்கிறதுக்கான வழிய வச்சுட்டாங்க. அதன் பிறகு வந்து தொடர்ச்சியாக இது குறித்தான பார்வை மக்கள்கிட்ட தொடர்ச்சியா பரவிக்கிட்டே இருந்தது. ஆனாலும் இந்த நிறுவனம் செஞ்ச பாதிப்புல மிக முக்கியமான பாதிப்பு கடல் வளம் முழுமைக்கும் இந்த கழிவுகளை வந்து அனுப்புனது. நிலம், நீர், காற்று, இந்த 3 வகையான பாதிப்புகளை வந்து திரவ வாயுங்க 3 வகையான சூழல்லையுமே இந்த பாதிப்புகள் வந்து மக்கள் உணர்ந்தாங்க. இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்தமா தூத்துக்குடி மக்கள்கிட்ட வந்து அன்றைய காலத்துல பெண்களுக்கான அதிக புற்றுநோயும் அது போக வந்து சிறுநீரக பாதிப்பும் தூத்துக்குடி முழுக்க மாநகர்ல பரவலா இருக்க ஆரம்பிச்சுது. இதை எல்லாமே மக்கள் உணர்ந்துகிட்ட பிறகு 2016 ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் தமிழ்நாட்டுல வந்து கொஞ்சம் வீரியமா நடக்கச்சுல வந்து எங்க பகுதியில இருந்த இளைஞர்கள் முழுக்க வந்து அவன் வேதாண்டா குழுமம் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ண வருது. அதையும் அந்த மக்கள் வந்து அந்த இளைஞர்கள் எல்லாருமே அதை விரட்டி அடிக்கானுங்க. அடுத்த போராட்டம் உனக்கு எதிராக தான்னு இந்த மாதிரி கட்டங்கள் நகர்ந்துகிட்டு இருக்கச்சுலதான் 2017 வந்து இந்த ஆலை வந்து மீண்டும் விரிவாக்கம்ங்கிற பேருக்கு வருது. இந்த ஆலையில வந்து 4 லட்சம் டன் வந்து உற்பத்திக்கு வந்து அரசு அனுமதிச்சிருந்ததுன்னா, ஆனா அரசுக்கு தெரியாமையே 16 லட்சம் டன் உற்பத்தி பண்ற சூழல் இருந்தது. அதுதான் உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. இப்ப அதோட 4 மடங்கு நான் வந்து விரிவாக்கம்னு மக்கள்கிட்ட அடிக்கல் நாட்டுது. அந்த செய்தி வந்து பரவுது. அதன் பிறகு தூத்துக்குடியில ஒரு மாபெரும் மனித சங்கிலி போராட்டம் நடக்கு. So after the 2013 incident is when people actually woke up to it. But even before that, there have always been many cases of illness, especially for the women. There are a lot of the number of cancer patients, the number of kidney infection for women has always been more. And in 2016, when they actually shut down the smelting factory for, I think, a span of about 4 days. And after 4 days, within 4 days, they kind of went into the High Court and got a order where they would pay a fine of, say, about 100 crore, just in case if, something happens, something goes bad, and they can, the government can use that money to compensate the people. This kind of a shady agreement was dealt with, and they kind of reopened the factory. And since reopening again, all of this has been going on. Be it the dumping of waste in the form of be it where in gases, or in the form of liquid, or in the form of solid waste. This has all been disposed of in a not so appropriate way. And the sea, the air that people around the facility breathe, and the actual land that they till and they produce something from is all being spoiled by them. Now in 2016,
or I think 2017, they came up with this proposal to expand this factory, and already there has been reports, or there has been proofs that they are producing way more than what they have acquired the license for. Like, they had the license to produce about 4 lakh tons, but the actual is more like 16 lakh tons. Now they want to add another facility and expand this, and that's when the protest again picked up. And in between, in 2016, one interesting point, how Vedanta has been this enticing role that they have been playing with every place for that matter, is when during the Jallikattu protest, I think most of us would know about it. It was massive agitation across Tamil Nadu, something that went on for almost a week. And during that protest, Vedanta actually wanted to sponsor youth from around Thoothukudi and help them with during the protest in whatever shape or form they could. But the people actually kicked them out, and they said they had warned them when they had come to the protest that once this is over, we are going to take it up against you. And in this background is where in 2017 they came up with the proposal to expand the facility. So yeah. Also, one more thing, because you brought up the protests and how they've picked up in recent years as well, and the way Vedanta has been trying to entice the youth with their faulty, really evil means, is how have the protests, if you can share a little more about the kind of protests that have happened in the last few years, especially what young people like you have been doing. How exactly have you been dealing with the overall struggle? What are your means of fighting? என்ன மாதிரியான Taxlin, are you you just got muted? Yeah, I'm just translating it to him. Yeah. I'm on another phone, so yeah. அதுதான் சொல்ல வரேன். 2017 அந்த மனித சங்கிலிக்கு அப்புறம் 2018 அந்த குமரட்டியாபுரம்னு ஸ்டெர்லைட் பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துல அந்த போராட்டம் தொடங்குனது. அந்த போராட்டம் 100 நாள் தொடர்ச்சியா நடந்தது. முதல்ல அறவழியில அந்த மக்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு உண்ணாவிரதம் போராட்டம் ஏற்பாடு செய்தோம். அந்த போராட்டத்துல இருந்து மக்கள் களைய மாட்டோம்னு சொல்லி இது பண்ணச்சில்ல காவல்துறை அரெஸ்ட் பண்ணுது. அதை கைது பண்ணி ஒரு 18 பேரை ஒரு 8 பேரை உள்ள ரிமாண்ட் பண்ணுது. அதன் பிறகு அந்த போராட்டத்தோட வீரியம் அதிகமாகுது. அதன் பிறகு குமரட்டியாபுரத்துல இருக்கிற இளைஞர்கள், இங்க நகர்ப்புறத்துல இருக்கிற இளைஞர்கள் இது குறித்தான முழுமையான பரப்புரை, மக்கள் பரப்புரையை முழுமையா மேற்கொண்டோம். அந்த பரப்புரை ஸ்டெர்லைட்டை சுத்தி இருக்கிற பக்கத்து கிராமங்கள்லயே அந்த போராட்டம் நீட்டிச்சுக்கிட்டே போனது. குமரட்டியாபுரம், பண்டாரம்பெட்டி, மீளவிட்டான், மடத்தூர் இந்த மாதிரியான பகுதிகள் முழுக்க அந்த போராட்டம் தீயாக பரவுனது. அதன் பிறகு நகர்ப்புறத்திலையும் இந்த போராட்டம் தீயா ஒரு பகுதியில எப்படி கூடங்குளம் போராட்டத்துல அந்த மக்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்தாங்களோ, அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற கிராமங்கள் எல்லா இடத்துலயும் அமர்ந்து தொடர் போராட்டம் நடைபெற்றது. அதன் நீட்சியாக மார்ச் மாசம் ஒரு மாஸ் மூவ்மெண்ட், ஒரு பெரிய 1 லட்சம் பேர் தூத்துக்குடியில திரண்டு அரசுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தணும், ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தணும். So this even though it is in especially after 2017 when the protest started, it started off with a human chain, and this happened in Kumaretiyapuram village that is very closer to the factory. And there people when they started off the protest, it was a 100 days protest that had gone on. And even after the 100 days, when people were not willing to move out, the establishment kind of used police force to come in and
arrest the protesters, and almost 8 of them were arrested, and almost for 18 days they were kept in remand. And this news kind of spread to the next villages, and the whole campaigning for this was done by mostly youth from the village, and youth who have taken up the cause to stand up against Vedanta. And from Kumaratiyapuram, this had gone to at least 4, 5, 6 different villages before it could go to the main town of Thoothukudi. But over the span of the next 1 year, this had picked up momentum, and this had gone to a point where almost more than 1 lakh people were protesting against it, and there was a mass gathering, and this was like a meeting kinds organized to talk about the ill effects of Vedanta, or talk about their mismanagement of resources and whatnot. And yeah, until this moment, from 2017 to 2018 to this grand meeting of gathering of so many people, it purely happened because of the youth from the villages who were affected by it or who were sensitive towards it. Right. Kebiston, we'll come back to you. I mean, these were important insights that you shared into the Thoothukudi struggle, starting from 1994, when hundreds of fishermen went and staged a protest in the seas, and then how now it's the next generation of young people who are taking it forward. I'll just go to Shanthi once because she's finally been able to join through Aswati's phone. Shanthi, if you could introduce yourself a little, and then we'd like to hear about the struggle that you have been involved in, the fight that you have been involved in against the Coca-Cola plant in Plachimada, which has been one of the longest running struggles in recent times against such a big corporation. So Shanthi, സമരത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാവോ? ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ സമരത്തെ പറ്റി ചുരുക്കി പറയാന്നാ? അതെ അതെ. ഇപ്പോഴത്തെ സമരം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നിയമസഭയിൽ ഐക്യകണ്ഠേന പാസാക്കിയ ട്രിബ്യൂണൽ ബില്ല് ഇനിയും അനുവദിക്കാത്ത കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ സത്യാഗ്രഹം സമരം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. 100 ദിവസം തികഞ്ഞിട്ടും അവർ ഇനിയും യാതൊരു നടപടിയും ഇനിയും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടിയാക്കിയിട്ടില്ല. അത് കാരണം ഇനിയും സമരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാവങ്ങളിലും വഞ്ചിക്കുകയും ചതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ കേരള ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇനി ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പിടി കിട്ടാത്തത്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന് ഒട്ടിച്ച് ഈ കൊക്കക്കോള കമ്പനിയിൽ സബ്സിഡി വാങ്ങിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കാരണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒക്കെയാണ് നിലപാട് ഇരിപ്പുള്ളത്. So ഇത്രയും പറയട്ടെ എന്നാല്. Currently the protest is going on because the tribunal amount which has been passed for compensation has not been released yet. For 100 days they have been protesting, and there has been no move from the government or the Kerala CM to take any proactive measures to release the compensation amount. There is a lot of issue that the people in the vicinity are placing with regard to drinking water, but nothing has been addressed so far. Shanthi, parnolu. Just to interrupt Shanthi once, if Shanthi can introduce, give a short introduction of herself, how long she's been associated with the struggle, and just a little bit about herself because we missed out during the introduction.
Shanthi, നിങ്ങൾ സമരത്തിൽ എത്ര കാലമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആണ്, എത്ര കാലമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, അവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാവോ? ഞാന് സമരത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. 20 വർഷങ്ങളായിട്ടും സമരത്തിൽ ഞാൻ ജോയിന്റ് കൺവീനർ ആണ്. നിരന്തരമായ സമരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ പങ്കാളിത്തം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ ഈ സമരത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനും വരാനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും 20 വർഷമായിട്ടും ഇനിയും ഈ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാര് നിരന്തരം പങ്കെടുത്ത അമ്മമാര് മരിച്ചുപോയ ഇത് ഉണ്ട്. പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സങ്കടമുണ്ട്. So Shanthi has been involved in the protest from the beginning for the last 20 years. She's currently the joint convener of the Plachimada's anti-Coca struggle. She's participated in the protest for several years. She wants to highlight that a lot of people who are part of the protest have also suffered a lot of health issues, and especially women, and there are also people who have passed away over these years who still haven't received, those families haven't received the compensation, and it's with a heavy heart that she wants to raise that also here. Right. And I mean, this has been a common thread, like, there have been again similar features, similar issues that everyone here has shared with us. And in addition to the state-sponsored injustices and the state-sponsored, basically the lax attitude towards people's lives that the state and the corporations have shown, is sort of the kind of insult to people's lives is magnified by many folds by the lack of compensation that sort of characterizes all of these disasters, crises, accidents. And even in Bhopal, where compensation, justice, nothing has been ensured, even after almost 4 decades of disaster that people have faced. Shanthi, Hello? Yeah, I was just putting on mute and translating it for her. So what's your question? I mean, I just wanted to highlight the point that even Shanthi is raising about not have, no one receiving compensation for, the kind of health issues that they have been suffering. But yes, continue. I just got carried away by that one thing. So Shanthi, if you can talk about the violation and the effects that people have faced, and even on the ecology, on people's livelihoods, on futures, the kinds of effect that the Coca-Cola company's actions and activities have had on people and on land around. പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ. ഓരോരുത്തർക്കും കടം ബാധ്യതകൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ലോണാണ് വാങ്ങിച്ച് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച കടം ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സമരത്തെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം, സമരത്തെയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മുടെ പിന്നെ ദിവസേനം അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പണിക്കും പോകണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജീവിക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. So people are suffering a lot of financial issues. They have also taken loans from other sources to continue hoping for this compensation amount. But this financial crisis is a huge issue, and the protest is also continuing on those facts.
Shanthi, I'll just ask. Shanthi, അവിടുത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമര സമിതിയുടെ ഒരു നിലപാട് വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അനാസ്ഥ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സർക്കാരാണെങ്കിലും സമരം 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോട് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ഈ സമരം നടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോ അവരുടെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച്? അവര് കണ്ടും കാണാതെയും പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. നമുക്ക് യാതൊരു സപ്പോർട്ടും യാതൊരു മറുപടിയും അതിന് ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണാതെ അറിയാതെ പോലെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോന്നും അറിയണില്ല. So they are not able to understand, though earlier the left parties were supportive of the struggle, why now being in the government they are pretending or they are not being proactively engaging to get the people of the area the compensation that they deserve is something that is puzzling for the protesters also. If there are any questions, specific questions, if you can write in the chat, I can ask her also. Yeah. I mean, right now, since you brought up about the kind of U-turn that the left parties have taken on their position in terms of the compensation and the struggles that people have been facing. What has the response of the left parties been now in terms of either repressing the struggle or what role are they playing now essentially? ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സർക്കാർ പ്ലാച്ചിമട ലോകം അറിയപ്പെട്ട ഒരു സമരമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടും അവര് യാതൊരു നടപടിയും അവര് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ വലയോടി വേണുഗോപാൽ അവര് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കത്ത് നമ്മൾ അയച്ചകത്ത് ഇത്ര രൂപ നഷ്ട ചെയ്തു തരുന്നതിന്റെ ലിസ്റ്റ് അവര് വെറുതെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സമരം തുടരേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലല്ലോ. So there's no proactive measure that the government or the party has taken in this regard, because if they've conveyed that the compensation will be released, but nothing has reached the people yet. If that had reached, then there's no reason for the protesters or the Samara Samiti to restart the protest. So we are not sure. Ashwati, can you speak a little louder? Your voice is trailed off. Just because the issue is I'm using the Ashwati can't hear you. 1 second. Yeah. I had taken out. Is it better now? Yeah. It is. Yeah, I had taken out the mic because simultaneously two devices. So she was saying that there's no proactive measure that has been taken from the government in this regard. If that was the case, then they didn't have to restart the protest. So it's because there's no support or solidarity from the left parties also that they are restarting the protest at this point of time. And I mean, what are your methods right now? How are young people involved? What is the next generation doing? Like how are they getting involved in the protest? How are they getting involved in the movement? എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യുവ തലമുറ ഈ സമരങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതെന്നൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാവോ ശാന്തി? യുവതലമുറക്കാര് ഈ സമരത്തെ ഇടപെടുന്നത് ഇനി ഭാവിയില് അവർക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഈ കോക്കോള ഇത്രയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തില് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് പിന്നെ ആരോഗ്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കണതിനെ പറ്റി പിള്ളേർക്ക് നല്ല അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെ അവർക്ക് ഇനി വരും തലമുറകളിൽ ഇനി അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ അവര് ഈ കൊക്കക്കോളയെ ഈ കമ്പനി ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവര് പിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. Yeah, so Shanti is saying for the younger generation, it has become a struggle for survival also, because they're not able to accept the fact that for generations this is going to continue. The health impacts are going to continue. The struggle for water is going to continue. So that is why they have been proactively involved in the struggle also. Shanti, സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ഈ സമരത്തിൽ എത്തരത്തിലുണ്ട്, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാമോ? സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും വീട്ടിലെ സമയത്തിന് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പിന്നെ ആ സമയം കൂടി കണ്ടെത്തണം. പിന്നെ സ്വയം ആരോഗ്യ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം പിന്നെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് സമരത്തിലും നമ്മൾ തുടരണം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ത്രീകളുടേതായ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അത്രയും ഞങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും ഞങ്ങളുടെ സ്വയം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. So as far as women is concerned, the same thing, like they have to be part of the protest and also ensure that the family is given like food. They have to prepare food for these things, and they also, it's the same with women also, because they also struggle a lot with health issues as well. So which is why it's become like a case of survival for all of us to be part of this protest and not let the corporates or the government win this. Is there something else that you would like to be a... Hello, can you hear me? Hello. അല്ല ശാന്തി, ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചതാ കേൾക്കാവുന്നുള്ളത്. Also, just one other thing is, other than sort of, are there any specific demands, or like, what are the demands that you're placing either, to the government or to the corporation to... ശാന്തി, എന്താണ് സമരസമിതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് ചുരുക്കി പറയാവോ? അതോടൊപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്ന, ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്നവരോട് നിങ്ങളുടെ അപ്പീൽ എന്താണെന്നുള്ളതും പറയാമോ? നിങ്ങളുടെ അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ സമരസമിതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാമോ? അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് കേൾക്കുന്നതിനെ, ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ. സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ. സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പിന്നെ കുടിവെള്ളത്തിന് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുടിവെള്ളം അടക്കം പൈസ കൊടുത്ത് കുടിക്കേണ്ട അത്രയും സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കൊക്കക്കോള കമ്പനിയാണ്. ആ കൊക്കക്കോള കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടത്തിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ തന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് തന്നെ പറ്റൂ. പിന്നെ ഈ ഞങ്ങളുടെ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സമര സമിതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഐക്യരാഷ്ട്രീയ സമിതിക്കാരും സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമരം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള സപ്പോർട്ട് അവരുള്ള കാരണം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വിജയിക്കാൻ കാരണം. പക്ഷെ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യപരമായും തൊഴിൽപരമായും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ദിവസേന ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ മുടക്കിയതിന്റെയും കുടിവെള്ളത്തിന് എത്തിച്ചതിന്റെയും എല്ലാത്തിനും കൂടി
നഷ്ടപരി അവന് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഈ സമരം പിൻവലിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So one of the things that the company has done is made us buy water for our own self, like from these places. And the Coca-Cola company is the reason for the situation that we are all in right now. So which is why it's extremely important that since people in the village have had to buy water for money, it is something that they need to compensate us for as soon as possible. And so far, whatever small victories that we have had or progress that we have made is because of the solidarity and support of the groups across who have supported us. And the company, but the company has also caused a lot of issues for us in terms of health, in terms of our job prospects, and on a daily basis, people have struggled a lot, which is why it is a matter of survival for us. It is a matter of everyday struggle for us that we cannot withdraw from the struggle, and hence we'll continue the struggle. And we appeal to everyone to support us in this struggle of ours. I mean, yeah, I mean, like it's been well known that how the activities of the Coca-Cola company dried up all your wells and contaminated whatever water source that was left. So this is again, I mean, sort of connects back to how it's always been a fight for survival, not just for the present generation. I'd like to ask Sharath if you'd like to add something to what Shanthi has said, since you joined us and have been with us. Hello. Hello. Can you hear Yeah. me? Yeah, I can hear you. Actually, I just want to update some recent means programs which Plachimada struggle committees organized there in Plachimada. So we have completed 100 days of Satyagraha there, and now we are going to organize some state level protest in front of the secretariat. And yes, 2 days before, the Coca-Cola companies agreed to give the land to the government of Kerala to organize some agricultural projects there. So we are appealing to the government to stop all these procedures and prosecute the Coca-Cola first, and they have to give back the compensation as soon as possible. To 216 crore rupees they have to give to the people of Plachimada there. After that, they can organize the agricultural projects there only. That's the recent development in Plachimada. So that's what I want to update. And I mean, do people support this plan of, like, having agricultural protests, agricultural projects that the government will run, or do people want to take control of the land instead? Or like, what are the dynamics over there? Actually, ये अभी CPM गवर्नमेंट कोका-कोला से बात करें, मेरे ख्याल से इधर ये स्ट्रगल से बहुत प्रेशर आ रहे हैं उसको इसमें कुछ करने के लिए, मींस बहुत दबाव आ रहे हैं उसके ऊपर, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये लैंड उसको देख के उधर से मींस ये लीगल प्रोसीजर से वो भाग जाने के लिए सोच रहे हैं, तो इसलिए वो ऐसा मींस प्लान्स बना रहे हैं। लेकिन अभी ये स्ट्रगल कमेटी और सोलिडारिटी कमेटी अभी जो स्टेटमेंट आज रिलीज किया है उसमें क्लियरली लिखा है कि हमको पहले कॉम्पेंसेशन मिलना है, कोका-कोला कंपनी को प्रोसिक्यूट करना है, जितना नुकसान उधर वो बनाए उसको, उन सबको एनवायरमेंटली, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चरल, हेल्थ वाइज वो सब नुकसान को उसको कॉम्पेंसेशन पे करना है। उसके बाद ही ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है गवर्नमेंट को। तो यही हमारा डिमांड है ये सोलिडारिटी कमेटी के स्ट्रगल कमेटी के ओर से। All right. शांता, आपका हैंड रेज्ड है, हम आपके पास आते हैं थोड़ी देर में, बस एक दो सवाल सबके लिए है यहाँ पे। I have just one question for everyone before we get to a short open discussion.
and this is to each of you individually for like with relation to what everyone else has said. What appeal do you have to each other, like for each other here, in terms of asking for support and solidarity for your movements? Because like we've heard here today, there are common threads connecting all your struggles in terms of state oppression, the means that the state forces use to silence voices, to imprison people, to torture, and to scare people into silence. And the way, no one has been compensated, environments have been destroyed, people's healths have been affected, and so on and so forth. So this is for everyone. Like, what appeal do you have to each other in terms of extending support and solidarity and ensuring that all of you get to see your movements, I mean, that they can come to a fruitful end, perhaps? I'll start with Shanthi, I guess, because she's we'll just go from Shanthi to Kebiston, then Noihrit and Laskey. Can you do the other way, Hindolee? All right. तो फिर लश्के से ही स्टार्ट करते हैं. लश्के के मतलब अगर कोई अपील रखना चाहते हैं. तो मु समस्तंको ठारो मु सुनिबाकु पाइले कि मते दुख भी लागुची कि ए सब जो घटना गुडा सब घटुची. तो मु जो समस्तंको ठारो मु सुनिली कि जो राजनेता गुडा जो 5 वर्ष को थरे जो भोट होची, पॉलिटिकल राजनेता जो कांग्रेस हो, बीजेडी हो, बीजेपी हो कि जो बीएसपी हो कि कम्युनिस्ट हो, ए जो राजनीति दल गुडा जो पार्टी गुडा जो कहउछंती माने जो स्वाधीनता आ गणतंत्र जो कथा कहउछंती, उपरिया टाउरिया अनुसार जो माने गणतंत्र रो कथा कहउछंती आ स्वाधीनतार कथा कहउछंती, सेटा को भावदर कथा माने गणतंत्र कथा कहउछंती आ को माने आंदोलन माने स्वाधीनतार कथा कहउछंती, से माने आमे तो किछि बुझी पारनु. तो से माने निज जाति नारे धर्म नारे ए माने निज निजर माने ये कथा कहउछंती. तो ऊपर टाउरिया अनुसार जो गणतंत्र जो कथा कहउछंती आ स्वाधीनतार जो कथा कहउछंती, एटा सब मिच प्रचार से माने चलैछंती. तो ए जो माने पार्टी रे जो राजनेता जो चले से माने सब शिक्षित लोक पाठ साठ पढ़ी भी, किंतु से माने सब जगह से मानक द्वारा पार्टी मानक द्वारा जो अनेक जगह रे आंदोलन जगह मानक रे हत्या करा जाउची, दमन करा जाउची, विस्थापन करा जाउची एई मानक द्वारा. तो ए माने शिक्षित होई कि मध्य पाठ पढ़ी कि मध्य एते जगह जगह रे अछंती, अन्य जगह रे सब पाठ साठ शिक्षित हे कि अछंती. एई माने ही आज देश को बिकुचंती, जल जंगल जमीन प्राकृतिक खनिज को बिक्री को माने बिकिबा को चेष्टा करूछंती. तेनु पाठ पढ़ीबा लोकंक ठारू पाठ पढ़ी नथिबा लोकंकर फरक कोन, तो सेटा हमें जानिबा को चाहू कि ए माने पाठ साठ जो माने पढ़ी से माने ही दलाल हे ए देशर जन जो आदिवासी गरीब दुखी दरिद्र दलित लोकों पाखरे जो जिनिस अछि कि भविष्य रे काम करियो, परिवेश को प्रदूषण कर जो ये करूछंती. तो तेणु तांको विरोध रे आमे सब तार जो गणतंत्र जो चलैछंती तांकर गणतंत्र को न हटेवा पर्यंत, तांकर गणतंत्र को दमन न करिया पर्यंत ए देश को शांति श्रृंखला रे बंचिबा को मिलबो नाही. ए देशर जनता शांति श्रृंखला रे बंचिबा पई माने निजर देशर नागरिक भाव में बंचिबा पर तांकर अधिकार मिलबो नाही. तेणु ए जो मिछ प्रचार जो चलीछि गणतंत्र जो कहउछंती एटा को दमन करिवा को पड़िबो. ए 5 वर्ष को थरे जो भोट दिया जाउछि आ जो गणतंत्र जो बोली कहउछंती सेटा को आमे दमन करिवा को पड़िबो. हमर जो गणतंत्र सत्य जो गणतंत्र हमर चलीछि जन आंदोलन जो चलीछि सेटा को आमे जेमति दृढ़ भाव रे माने एमते आंदोलन आमे जो करि परिबा कि तेणु जो गणतंत्र अच्छी आ स्वाधीनता भाव तांकर जो बंचुछंती सेमती आमे समस्ते एकटा हेई एकजुट हेई हमर जल जंगल जमीन को प्राकृतिक खनिज संपत्ति को बंचेबार हेले ए देश को आमे समस्ते जन आंदोलन अच्छु समस्ते एकता हेई लड़ाई करिवा को पड़िबो. आ जो
मानसिकतार जो गुलाम जो बनौछंती फैक्ट्री हेले विकास हबो खनि हेले विकास हबो पहाड़ भांगिले विकास हबो विस्थापन हेले विकास हबो बोली जो कहउछंती विस्थापन को जो माने कहउछंती विकास बोली सेटा को आमे ता विरोध रे आमे स्वरोत्थोलन करबा को पड़िबो ता विरोध रे आमे आवाज उठेबा को पड़िबो आउ ए जो हमर जो चालीची दुर्नीति शोषण लुंटन अत्याचार सेटा को आमे हटेबा को पड़िबो तेणु समस्तन को धन्यवाद आ स्वागत जेमती आगामी दिन रे आमे समस्त एकता हे एकजुट हे आमे लड़ाई करिबा हमर जल जंगल जमीन हक अधिकार पाई जीवन जीविका पाई तेणु मु तो समस्त को जो बंधु मान मो सहित जो मीटिंग चले कॉन्फ्रेंस ए वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जो मीटिंग चले से मानक समस्त को धन्यवाद एवं स्वागत लाल जोहार लाल जवाहर लास्की राजन अगर शांत बहुत समझ में आया है पर फिर भी अगर थोड़ा सा हाँ तो बेसिकली संक्षेप में बोला जाए तो 5 साल में एक बार जो वोट दिया जाता है वो भले कोई भी पार्टी हो कांग्रेस हो बीजेडी हो कोई भी पार्टी हो तो हम लोग वो किस लिए दे रहे हैं तो किसी को भी स्वाधीनता फ्रीडम और डेमोक्रेसी का एक्चुअली मतलब सबका अपना अपना सारे पार्टीज डेमोक्रेसी बचाने का बात करते हैं सारे पार्टीज फ्रीडम का बात करते हैं लेकिन असली में फ्रीडम और डेमोक्रेसी जो है वो पीपल्स मूवमेंट में ही है तो अनटिल एंड अनलेस वो जिस फ्रीडम और डेमोक्रेसी का जो बचाने का वो जो लोग बात करते हैं उसका जब तक हत्या नहीं होता है उसको जब तक हम लोग हटाते नहीं हैं तब तक जन आंदोलनों का कभी भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम नहीं होगा और बोले थे कि जो लोग भी आज खनिज संपत्ति और ये सब लूटने का बात कर रहे हैं वो सब सुन के उनको दुख लगा ऐसा हर देश भर में ऐसा हो रहा है और सबके साथ हमारा समर्थन है सारे जन आंदोलनों के साथ हमारा समर्थन है और ये हमको जानना ये जरूरी है कि अभी ये सारे लोग जो शिक्षित होके हैं वही लोग विकास के नाम पर विस्थापन के नाम पर सारे खनिज को लूट रहे हैं उनको लगता है कि विस्थापन करने से विकास होगा ये शिक्षित लोग ही कर रहे हैं तो ये किस तरह का शिक्षा है बार बार वो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड मतलब वो जो गुलाम मानसिक मेंटल स्लेवरी किस तरह से बनाया जा रहा है लोगों का उसको जब तक हम लोग दमन नहीं करते उसको जब तक हम लोग प्रतिरोध और प्रतिवाद नहीं करते हैं तब तक हम लोग कभी इस चीज से उभर नहीं पाएंगे और हम लोग कभी भी आगे हमारा ट्रू डेमोक्रेसी और ट्रू फ्रीडम का बात नहीं रख पाएंगे ऐसा वो बोल रहे हैं बिल्कुल बहुत 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 मतलब पूरे एकदम कोर में जाके जो पॉइंट है जो यहाँ से मूल भेदभाव मूल प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं वहीं पे जाके लश्के ने बात पॉइंट किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद लश्की ये मतलब सबको एक पर्सपेक्टिव में लाने के लिए और कहाँ से बदलाव लाने का जरूरत है उसमें भी आपने बहुत बहुत गहरी बहुत इम्पोर्टेंट बात रखी तो थैंक यू बहुत इंस्पायरिंग था आपके ये शब्द नोहिरित इफ यूड लाइक टू say something here. Yeah. So when we try to explore and discuss issues related to the Northeast, especially when development is related, it's essential to understand that Northeast is somewhat a racialized category promoted by the state itself, by the Indian state itself, so that certain development plans are deployed and are. Yeah, am I loud enough? Yeah. Okay, all right. So deployed so it's a racial category that allows the Indian state to deploy development plans to be to deploy development plans and efficiently carry out the extraction policy of the Northeast. And there are certain dynamics that is somewhat different from the rest of the India. For example, we talk about internal colonialism often, and that is personally I believe
Vishnu Prasad Rabha, a communist revolutionary and an artist of Assam, what he did is reflective of that. What he did was in 1950 when India gained independence, he marched with a black flag and said this independence is a lie and it's just a change of skin. So I think dynamics such as internal colonialism has also been taken account of. But coming back to the issue of Baghjan or any other environmental or corporate issues, corporate exploitations or exploitations promoted by the state, it's also essential to explore a common pattern amongst all issues and collect, so that we can collectively resist and ultimately succeed in our movements. That's all from my side. Thank you, Noihrit. I mean, yes, it's even as, you know, it sort of connects to what Laskey has also been saying in terms of extraction and displacement and how the state makes these categories, even the labels that, you know, everyone who's fighting for basic dignity and rights and for the right thing gets labeled as Maoists or as alpha members, because, you know, you can dare to rise up against the state forces and show people, you know, what the truth is or what people should care about. So thank you for that. Kebiston, if you'd like to add something here. இந்த போராட்டம் வந்து தூத்துக்குடியில நடந்த போராட்டத்தை இந்த அரச பயங்கரவாதம் என்ன செஞ்சதுன்னா 2018 மே 22 அன்னைக்கு ஒரு மாபெரும் படுகொலைய அரசு இயந்திரம் வந்து இந்த போராட்டத்தை ஒடுக்குறதுக்கு ஒரு மாபெரும் படுகொலையை நடத்தி 15 உயிர்களை வந்து இந்த மண்ணில் பலி எடுத்தது இந்த கவர்மெண்ட். அதன் பிறகுதான் இந்த ஆலை தற்காலிகமா மூடப்பட்டது. இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த நீதி விசாரணையை வேண்டி மக்களும் போராடிட்டு இருக்கிறோம். இங்க இருக்கிற யூத் மூவ்மெண்ட்டும் இளைஞர்களும் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இது வரைக்கும் எந்த ஒரு தீர்வும் எட்டல. இப்போ தனிநபர் ஆணையம், ஒரு நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில ஒரு விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு அதுல 17 அரசு அதிகாரிகள் மீதும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மீதும் குற்றச்சாட்டப்பட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த கவர்மெண்ட்டும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கல. அதை சட்டமன்றத்துல வந்து அதை அமல் வச்சிருக்காங்களே தவிர அதுக்கான எந்த நடவடிக்கையும் இந்த அரசு எடுக்கல. இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க இருக்கிற எல்லா இந்த மாதிரி சிக்கல்களுக்கும் இன்னைக்கு அஸ்ஸாமா இருக்கட்டும், இல்ல ஒடிஷாவா இருக்கட்டும், இல்ல போபாலா இருக்கட்டும், இல்ல இந்தியா முழுக்க நடக்கிற இந்த சிக்கலுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கிறது இந்திய ஒன்றிய அரசு, அதோட இருக்கிற பாலிசி, அதோட சட்ட திருத்தங்கள். இத நம்ம மாத்தாம இன்னைக்கு இருக்கிற உலக சந்தைய, இன்னைக்கு இருக்கிற குளோபலைசேஷனை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தாம அதுக்கு எதிராக நின்று போராடாம நம்ம எதையும் செய்ய முடியாது. இந்தியா முழுக்க இருக்கிற அனைத்து தேசிய இனங்களும் ஒன்று சேர்ந்து இந்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த சட்ட திருத்தங்களுக்கு எதிராக இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளோட ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் நம்ம மாத்த முடியும். இங்க இருக்கிற பொருளாதார திட்டமா இருந்தாலும் சரி, இங்க பொருளாதார கொள்கையா இருந்தாலும் சரி, ஒட்டுமொத்தமா சேஞ்ச் பண்ணணும். இங்க இருக்கிற திட்டங்கள் முழுக்க முதலாளிகளுக்கும் பெரு நிறுவனங்களுக்கும் சார்ந்து இருக்குது. அதனால்தான் இங்க வந்து மனித வாழ்வியலுக்கும் இயற்கை சூழலுக்கும் எதிரான தொழிற்சாலைகளும் பல வகையான திட்டங்களும் இந்திய மண்ணில் வருது. இங்க இருக்கிற பழங்குடிகளா இருக்கட்டும், மீனவர்களா இருக்கட்டும், விவசாயிகளா இருக்கட்டும், இங்க இருக்கிற ஒட்டுமொத்த இயற்கையை நம்பி இருக்கிற மக்களும் இன்னைக்கு ஒரு போராடும் சூழலுக்கு வந்திருக்கும். இதுக்கு இன்னைக்கு இந்திய ஒன்றிய அரசின் திட்டங்களும் அதோட பாலிசியும் தான் காரணம். இதை எதிர்த்து போராட இங்க இருக்கிற இந்தியால இருக்கிற யூத் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் ஓரணியா நிக்கணும். முதல்ல அந்த யூத் மூவ்மெண்ட் ஒரு அரசியல் படணும். அதன் பிறகுதான் இந்தியாவின் அரசியலை மாற்ற முடியுங்கிறது தான் நம்மளோட கோரிக்கையா இருக்குது. நன்றி, வணக்கம். Yeah, hi. So what, continuing from what he was saying earlier, what he was saying is there was a during the Sterlite protest in 2018, there was a murder orchestrated by the establishment. The cops themselves shot almost 15 people on one day, and there has been no cop or anybody who has been put in jail, or nothing has happened. Even though there was a inquiry commission that was set up, they kind of identified the culprits to be 17 cops, and still nothing has happened. But what he feels is, as youth movements, as youth-led movements, or as in general movements, if we have to come together, one of the strongest, one of the
most important point where we have to understand is that this neo-capitalism, this crony capitalism that is going on, this globalized and the idea of globalization itself is the problem. Be it in Assam or Odisha or Bhopal or Kerala or any place across India, we have these policies that are defined by the government, which are extractive in nature, which are against the will of the people, and which are for the benefit or the betterment of the what do you call that, of the capitalists, or the large corporations. So unless we come to some kind of a clarity on how we can question this as a collective, as a bunch, this cannot, this nexus, this nexus that operates, this cartel that is operating cannot be broken. So we from all the we are a union of nationalities, we are nation states. So all the nationalities, irrespective of the different types of struggle that we may have, we are all facing the same enemy, and we have to find ways to come together and have a united front when we are opposing these be it government policies or these corporations. Very powerful words, and I'd also like to add something to what Kebiston just said, and which is something very important, and for me it's far beyond our session or just or even our movements, is how this whole nexus of globalization, neo-capitalism, crony capitalism are feeding off of each other. That also sort of makes it difficult for us to sustain our movements itself, because I mean the elite upper caste, upper class society that controls so much of money and power, they it's very hard to find a response against issues of globalization and capitalism on those fronts, and to sort of it's essential more than ever to communicate or to push through that barrier that we have, which which also creates hurdles for our movements to sort of take up a larger, grander scale and be even more effective. So thank you for bringing that up as well, and that's also something that needs to be consistently pushed for and pushed against. So thank you, Kebiston. We'll go on to Shanthi for to hear what appeal she might have. ഈ പ്ലാച്ചിമടയിലെ കൊക്കക്കോള കമ്പനി വരുത്തിയ നഷ്ടം മണ്ണിനെയും മനുഷ്യനെയും വെള്ളത്തിനെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ച ഈ കൊക്കക്കോള കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടം ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കൊടുക്കണം. തീർച്ചയായും ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ചതിക്കുകയാണ്, വഞ്ചിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ നീതി അതിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെയേ നീട്ടി കൊണ്ടുപോയാൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും സമരമായ ശക്തമായ സമരം മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യും. ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടി ഞങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി ഞങ്ങളുടെ എസ് ടി നിയമലംഘനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവര് നടത്തിയ നഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ട്രിബ്യൂണൽ ബില്ല് കിട്ടുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായ സമരം നടത്തി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ പറയണം. So the kind of loss and destruction that the Coca-Cola company has done to the water, land and soil is horrible, and the government needs to compensate the people for the kind of losses that we have suffered. We have been cheated throughout by these the kind of promises that they have made, but until the government takes proactive measures to compensate the losses that we have suffered, we are going to continue the struggle. We need justice that the tribunal had promised us, and we will continue protesting and making demands and continuing our struggle until justice is delivered. Right.
Bilkul, I mean, that's the only way forward. I mean, there is no other choice really. So thank you for sharing that, Shanti. यहाँ पे शांता का हाथ हैंड रेस था पहले, अब आपके पास आएंगे हम लोग एक बार की Anshuk and Shanta unmute. शांता, आपको कुछ बात रखना है? और बाकी किसी को भी अगर कोई सवाल अगर किसी को कुछ कहना है, कोई सवाल रखने हैं हम लोगों के स्पीकर्स के लिए, if anyone has a question for any of our speakers here. If not, we have a short little presentation on Bhopal. We also had another speaker from Bhopal itself, Nousheen, who couldn't join us because she fell sick at the very last moment, unfortunately. But we will have a full session tomorrow on 38 years of the Bhopal disaster, where the entire panel will be speakers who have been fighting against fighting for compensation and for justice. And Anshu has a few. Yeah, there are a few photos from the Bhopal struggle itself that we'd like to share with you. These are people's movement, people gathered at Delhi today at Jantar Mantar. आज जंतर मंतर में भोपाल गैस ट्रेजेडी के 38 साल पे जो धरना लगा था, उसमें आप देख सकते हैं काफी कई सारे लोग आए थे अपने मांग रखने to place their demands, and we really hope that justice is delivered soon for the victims of the tragedy. हम लोग खत्म करने से पहले एक बार लश्के के पास जाएंगे, या for the crime really. हम लोग एक बार लश्के के पास जाएंगे, अगर कोई भाषा में आप कुछ रखना चाहें, कोई गाना या कुछ शेयर करेंगे आप? तो ना रिक्वेस्ट जेहेतु ई देशवासी सबो नानास्का ताइंगा समस्ते एकजुट आइसे जो अन्याय अपराध दुर्नीति जो वाही ने इदा मारो समस्ते एकजुट आहानिगा हटे केल दरकार यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री चलाने साथिंगनी जाके नानु समस्तों को समर्थन की माए आउ जेते कि भी देशता जन आंदोलन चलाने सबु मार एकजुट आइसी ता सहित मार लड़ाई किसी ई जो दुर्नीति अत्याचार जो चलाने एदा हटा केल दरकार. थैंक यू लश्के. कोई लोकगीति, कोई गाना अगर खत्म करने के लिए आज का सेशन 2-4 उसका ट्रांसलेट कोई में या नहीं जरूरी है? कर दीजिए. हाँ, वो भी ट्रांसलेट भी कर दीजिए. उसका एसेंस तो हम सभी को समझ में आया है, बट यस प्लीज ट्रांसलेट. बस उसमें बस इतना सा मिलना था कि वो he just appealed to the sisters, women and all the mothers to also come along with us in the movement. And यूनियन कार्बाइड में जिन लोगों का आज वो प्रदर्शन के ऊपर दिखा रहे थे, तो उसमें जिन लोगों का दिखा रहे थे, तो उसके साथ भी हमारा समर्थन है. हम लोग मिलके सब लोग लड़ाई करेंगे. That's what he said. जोहार. दो लाइन अगर आप गा दे कोई में लश्के, फिर उस नोट पे हम लोग आज खत्म करेंगे. वांदो ताई बाई एकता आना एकतार बारुतियारी किन मारो एकजुट आना वाहा मानेरु विदेशी सरकारु माजागा माटी सबु अनेरु मांगे कांगला खिहानेरु
Vandutai bai ekota ana ekota robar yutiari kino maro eko jutu ano. Nayu taki komiti kino maniti hisabore cholo ano nijo gore chida ano. Vandutai bai ekota ana ekota robar yutiari kino. चलिए बहुत बहुत अच्छे नोट पे ये खत्म हुआ और जो गीत का जो मैसेज है उसको हम लोग दिल में रखते हुए आज का सेशन खत्म करेंगे और सभी को धन्यवाद. Thank you to everyone for joining us and for sharing your stories, your struggles and your fight with all of us. And we hope that we can take this forward with even more vigor and even more determination. सबको जैसे मीरा कह रही है ढेर सारा प्यार. आज यहीं पे ही हम लोग खत्म करते हैं फिर. Anshu, you can stop recording.